decides your future of essay. So this is a practical example that how if you attend this class and all the classes in this classroom seriously, so you will be having no essay problem. Similarly, any country including Pakistan will not be having problems if our classrooms work properly and appropriately. You know that one of the famous couplet verse of Sheikh Sadi is Chon nehad memar diwar kaj ta suraya meeravad diwar kaj. If the first stone is not straight, the wall, even if it goes till sky, will be not straight. It will be tilted. Primary education is the foundation of our education system, and education institutions produce human potential, human capital, human resources. So as we have different factories and they produce different products, if the quality of the product is good, it means that the factory is good. Similarly, if Pakistani education institutions or the education institution of any country, if they have quality education, then there will be quality products in the form of human capital, human resources. This is why quality education is part of the SDG, Sustainable Development Goals. Future of any nation depends on the quality of education in classrooms. What is a classroom? Classroom is a place of learning. Classroom is a place of teaching. Classroom is a place where teacher and students come together and they are involved in education, instructions, learning, training, guidance, coaching. Now, if that classroom works like an excellent workshop, so everything will be all right. What happens in many classrooms that there is a teacher-centered approach. Teacher-centered approach. Teacher is more active. While modern pedagogy tells us pedagogy means the science of learning and teaching. So according to modern pedagogy, there should be student-centered approach. Student-centered approach. Whole focus should be on the student, not on the teacher. That's why in modern pedagogy, the name of the teacher is facilitator and name of the student is participant. Name of the teacher is facilitator and name of the student is participant. If you do not participate, so you are not a student. And if the teacher doesn't facilitate learning, then he or she is not teacher. That's why we have to understand that classrooms must have efficient, effective, honest, professional and dedicated teachers. Because from classrooms, nations emerge. Why there are so many problems in Pakistan? Because our classrooms are not working properly. Why the education system of Pakistan is dilapidated, downtrodden? Who is responsible for this? Teacher is mainly responsible because teacher they receive sufficient amount of money. Usually there is a classroom with teaching and learning material. There are chairs and there are blackboards or whiteboards, but there is no proper teaching, there is no proper education. And that's why
Pakistan is suffering. There is no curiosity, no creativity, no skepticism, no research. The result is that there is no critical thinking. People are there only robots, they are mechanical, they learn by rote, there is no discussion, no analysis, there is no professionalism, there is less budget for education, for classroom, there is no proper management and no proper administration. There is no proper inspection from education department. That's why teachers, they do not perform their duties properly. Students, they are involved in other activities and they do not focus on their education. That's why there is no science, there is no philosophy, there is no research, there is no proper learning and teaching expertise, and there is no global standard education practices. And that's why a country like Pakistan, who has 240 million population, there is not a single globally known scientist, intellectual, writer, or any person of global fame. That's why improvement is required on the part of classrooms, because from here human resources come out and then they run the system. So please, after this introduction, make a comment that classrooms determine the development of a country and the prosperity. तो ये जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, इसको आप बार बार सुने. इसमें मैंने दरिया को कोजे में बंद किया और आपको बताया कि क्लासरूम जो है वो फैक्ट्री है, वो लेबॉर्ट्री है, वो वर्कशॉप है. अगर ये एक अच्छी जगह है तो उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी ठीक होंगे. क्लासरूम जो है उसमें स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होना चाहिए. फोकस जो है वो स्टूडेंट पे होना चाहिए. अब स्टूडेंट जो है वो यंग होता है, बच्चा होता है, उसको समझ नहीं आती, तो स्टूडेंट जो है वो एक्टिव नहीं होना चाहता. टीचर जो है वो स्टूडेंट को फोर्स करे, मोटिवेट करे, इंस्पायर करे कि वो एक्टिव बन जाए. एक्टिव बनना बड़ा मुश्किल काम है. मसलन ये हमारा क्लासरूम है, तो इस क्लासरूम में एक्टिव होना क्या होता है? कमेंट करना, क्वेश्चंस करना, इवैल्यूएशन के लिए अपना काम देना. कौन करता है इसको? हर बंदा कहता है कि बस मैं आराम से बैठो, सुनो, कुछ ना कुछ जो है मुझे मेरे पले पड़ जाएगा. तो मॉडर्न पेडागॉजी जो है, PEDAGOGY, पेडागॉजी, द साइंस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, वो ये कहता है कि स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच. स्टूडेंट मस्ट बी पार्टिसिपेंट. टीचर क्या है? ओनली फैसिलिटेटर. केवल ये जो टीचिंग का लफ्ज है ना, ये भी खत्म हो जाएगा. बुरा लगे टीचिंग, मुझे तुम टीच करोगे, तुम कौन हो? तो दुनिया में अब ये टीचिंग वाला कंसेप्ट जो है वो खत्म होता जा रहा है. अब मेरा काम क्या है कि मैंने जी 9 बजे अपने आप को फारिग किया और फेसबुक में आपके लिए क्लासरूम बना दिया. इधर मैं आके बैठ गया, माहौल मैंने बना दिया, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता. तो मैं सिर्फ आपको सीखने का सहूलत देता हूं, माहौल बनाता हूं, जगह बनाता हूं, क्लासरूम में आपको बिठाता हूं, आपके लिए डिसिप्लिन बनाता हूं, बस. बाकी सारा काम आपका है. सारा काम, सब कुछ स्टूडेंट करेगा. कनाडा में, बहुत सी कंट्रीज में मैंने देखा है कि क्लास में टीचर कुछ भी नहीं करता, ऐसी कुर्सी पे बैठा होता है, सारा काम स्टूडेंट करते हैं. टास्क को जरूर देता है कि ये करो, वो करो, नजर भी रखता है, डिसिप्लिन भी रखता है, लेकिन काम स्टूडेंट करते हैं. तो अभी आप लोगों ने काम करना है और आपका काम ये है कि आप या मुझसे क्वेश्चंस करें या
क्लासरूम, इस पे मैंने आपको नोट्स भी दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, आउटलाइंस भी दिए हैं, पैराग्राफ्स भी दिए हैं, आपने पढ़े होंगे। नहीं भी पढ़े तो एक आसान सा टॉपिक है कि क्लासरूम्स डिटरमिन द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। तो नेशन जो है वो बनती किधर है, वो क्लासरूम्स में बनती है। पाकिस्तान के मसाइल क्यों है, क्योंकि हमारे क्लासरूम्स में सही काम नहीं हो रहा। तो अभी आप मुझसे क्वेश्चंस करें, नोट्स को आपने पढ़ा है उसमें से कोई क्वेश्चन करें, जनरल एजुकेशन पे क्वेश्चन करें, कोई भी क्वेश्चन करें, और साथ जो है आज के टॉपिक में कुछ इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस लिखे कि इस टॉपिक को आप कैसे लिखोगे। क्वेश्चन भी कर सकते हैं और साथ जो है लिख भी ले, ताकि मैं आपको इवैल्यूएट करूं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ, कोई पैराग्राफ इस पे लिखे। Crux of the matter is that classrooms make nations. Delaying gratification. 4 factors are involved in our educational failure. अच्छा, इसको involve अच्छा लफ्ज नहीं है यहाँ, सो आप सिंपल लेके there are 4 factors for the educational failure of Pakistan. अगर our से आपका मतलब पाकिस्तान है तो our मत लेके, pronoun मत लेके, involve लफ्ज यहाँ ठीक नहीं है। Teacher tells students don't hurt us by questioning. Father tells teacher that I can buy the books, notebooks, uniform, and I can do nothing more than that. Educational officers, inspection नहीं, inspectors, they tells नहीं। आज अभी हमने टेंसेस का क्लास किया, आपने टेंसेस पे इतनी ज्यादा लेक्चर भी दिए है, डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन। तो they tell not to make, not they don't, नहीं, not to make a, not to disturb us, not to disturb us, सिंपल लिखिए not to disturb us, बजाय इसके कि they do not make us disturb की जगह not to disturb us. Do your work silently. पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ा था, इसमें एडजेक्टिव और एडवर्ब। वर्ब चूंकि वर्ब है तो इसके साथ एडवर्ब आएगा साइलेंटली। गवर्नमेंट दे आर आल्सो केयरलेस। हाँ, अब मैं आपको एक बड़े पत्ते की बात करूं जो मैंने इस पे पोस्ट भी किया था कि ये एक घिनौनी साजिश है। And there is a tacit understanding. Tacit understanding. Tacit का मतलब क्या है? TACIT. खामोश अंडरस्टैंडिंग है among 4 parties: teachers, students, administration, government. और ये बहुत खतरनाक बात है। स्टूडेंट, टीचर कहते जी हमें तंग ना करो, जिस तरह की इसने लिखा है, हम आपको पास करेंगे। स्टूडेंट कहते टीचर को सर आप हमें ज्यादा तंग ना करें, हमें ज्यादा काम शाम न दिया करें, बस टाइम गुजारा करें। इंस्पेक्टर आते हैं, चाय शाय पीते, समोसा पकौड़ा खाते हैं, चले जाते हैं। गवर्नमेंट भी कहते जी जान छुड़ाओ, क्यों हम क्रिटिकल थिंकर्स बनाते हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम बनेंगे, ऐसे ठीक है, बस नौकरी के पीछे भागते रहे। कोई क्रिटिकल थिंकर, कोई तेज बंदा ना हो, एनालिस्ट ना हो जो तज्जिया करे, जो क्वेश्चंस करे। तो इस वजह से ये पूरा सिस्टम जो है ये तबाह है। देयर इज अ टैसिट अंडरस्टैंडिंग। पेरेंट्स कहते कि जी हमें जान छुड़ाओ, जिस तरह की डिलेइंग लिखा है वो हम पैसे दे सकते हैं, कौन अपने बच्चों का हर वक्त पूछता रहेगा।
तो पेरेंट्स पे टीचर को कहते हैं यार उधर ही उनको संभालो, हमारी तरफ मत भेजो। तो ये 4-5 पार्टीज के दरमियान जबरदस्त किस्म की अंडरस्टैंडिंग है और ये 2 नंबरी है, 9 सरबाजी है, चूना लगाना है और 4 पार्टी इस पे खुश है। स्टूडेंट भी नहीं चाहता है कि टीचर हमें गुस्सा हो या हमारी बेइज्जती करे या हमारी कमजोरियां बताए या हमें काम दे। टीचर का भी वही हाल है, पेरेंट्स का भी वही है, गवर्नमेंट का भी वही है। इस वजह से पाकिस्तान तबाह है। सो दिस इज अ वेरी गुड एनालिसिस, थैंक यू। Sir, while writing essays, should I write a first paragraph on problems and then second paragraph solution, or I apply the formula EIERC in each paragraph? You have two styles. दोनों styles है। Each paragraph should be complete. इसमें problem भी है, solution भी है। और you mention the problems in few paragraphs and then you come to the solutions in the last paragraphs. Like 3-4 paragraph अपनी problems लेके 3-4 पे अपने solutions लेके। तो IEARC जो है introduce, explain, analyze, recommend, conclude, ये ऐसा फार्मूला है कि इसको आप पूरी स्ट्रक्चर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस का मतलब कि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखना है, दूसरे में एक्सप्लेन करना है, तीसरे में एनालाइज करना है, चौथे में रिकमेंडेशंस देने हैं और 5वें में कंक्लूड करना है। 5 पैराग्राफ्स के लिए जबरदस्त है। या इसी को आप एक पैराग्राफ पे भी डाल सकते हैं। 2-3 जुमले आपने इंट्रोड्यूस किए, 2-3 जुमले आपने प्रॉब्लम्स बताए, 2-3 जुमले में आपने ये जो एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस है इसके अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर आपने रिकमेंडेशंस दिए, रिकमेंडेशन का मतलब सॉल्यूशंस है, और फिर आपने जनरल कंक्लूजन लिखा। तो बोथ स्टाइल्स आर ओके, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट। Sana Khan, a wet soil can be molded. Molded मेरे ख्याल में मैं भी कंफ्यूज हो गया कि mold या इसका सेकंड फॉर्म देखिए कि क्या है। molded होगा in any shape. Students are like wet soil and it is in teacher's hand to mold their character. A teacher's positive and negative vibes. A teacher's positive and negative vibes can change students' life. हाँ, इसको थोड़ा सा टॉपिक के साथ भी कनेक्ट करो। ये तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बताए। टॉपिक ये है कि कौमें जो बनते हैं वो क्लासरूम्स में बनते हैं। I have applied for the post of SS History, but I did my bachelor's in political science. Did not share a syllabus for the test. So what should I prepare for the history portion? SS History. So go to Wikipedia. Wikipedia का जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री पे जो उनका आर्टिकल है वो पढ़े, और फिर जो है वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े। गूगल करिए वर्ल्ड हिस्ट्री, ब्रीफ वर्ल्ड हिस्ट्री गूगल में लिखे। पाकिस्तानी हिस्ट्री करिए, मुस्लिम हिस्ट्री पढ़े और मुगल हिस्ट्री वगैरह बेसिक्स, तो वो पढ़े। तो यही है वर्ल्ड हिस्ट्री, पाकिस्तान हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री और ग्लोबल हिस्ट्री का एट अ ग्लांस। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आप जाए ना सेफ 2 में जो सर्च है उसमें लिखे वर्ल्ड हिस्ट्री, तो उस पर मैंने बेहतरीन वहाँ एक पोस्ट में लिंक्स भी दिए हैं। एंड सेंड मी दिस क्वेश्चन इन व्हाट्सएप, सो आई विल बी गिविंग यू सम गाइडलाइंस।
thesis statement. The last sentence of introduction is called thesis statement. The last sentence of introduction is called thesis statement. पहले तो ये लिखे अपने नोट्स में लिखे या यहाँ कमेंट करें। इंट्रोडक्शन पर अगर आपका जो आखिरी सेंटेंस है उसको thesis statement कहते हैं, नंबर 1. Number 2, thesis statement is the conclusion of introduction. Thesis statement is the conclusion of the introduction. Introduction का जो conclusion है उसको हम thesis statement कहते हैं. Number 3, thesis statement is position on the topic. Position on the topic. कि टॉपिक पे क्या पोजीशन है, आप इस टॉपिक के बारे में क्या कहते हैं, आपका फाइनल वर्डिंग क्या है, आपके हक में है, इसके खिलाफ है, इसके जनरल क्या आप कहते हैं इस टॉपिक के बारे में. सो दैट इज थीसिस स्टेटमेंट. फॉर एग्जांपल एजुकेशन, अभी जो क्लासरूम्स बिल्ड नेशन ये टॉपिक है, ठीक है. इंट्रोडक्शन में 3 पार्ट्स होते हैं. नंबर 1, हुक्स, कोई भी जनरल अट्रैक्टिव सेंटेंसेस, हुक्स, जनरल अट्रैक्टिव सेंटेंसेस. नंबर 2, बैकग्राउंड, एजुकेशन का क्या बैकग्राउंड है. नंबर 3, थीसिस स्टेटमेंट, विच इज योर पोजीशन ऑन द टॉपिक. तो ये जो टॉपिक है क्लासरूम्स बिल्ड नेशंस, तो इसका ये है कि आपका थीसिस स्टेटमेंट का क्या होगा. पहले आपने जनरल बातें लिखी. अभी मेरा ये जो शुरू का लेक्चर तो उसको सुनो, तो वो इंट्रोडक्शन था सारा कि एजुकेशन इज हाईली एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन लाइक फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन. Formal education usually takes place in classrooms. Classroom is a place where teacher and students come together. There is evidence that the first academy was established by Plato in Athens, and there Plato established the first classroom, and from that classroom students like Aristotle were produced. तो ये आपने बैकग्राउंड दिया. Now thesis statement. Definitely classrooms produce nations because education is to change the behavior properly and to impart knowledge, skills, values and attitude. तो ये आपका आखिरी जो जुमला होता है उसी को थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं. अच्छा, मैं आप लोगों को दिल की बात करूं कि मुझे सेंस करते हुए कोई पता नहीं था कि थीसिस स्टेटमेंट क्या है, तो हुक्स क्या है, तो ये क्या है, तो वो क्या है. आई वाज जस्ट एन एक्सीलेंट राइटर एंड एविड रीडर. मैं पढ़ता था, लिखता था, पढ़ता था, लिखता था. इन चीज़ों में मैं कभी नहीं गया कि जी क्या है, तो ये है, तो वो है, तो क्या होता है, तो ये होता है, तो वो होता है. तो मैंने सारे एग्जाम पास किए. तो इन चीज़ों में इतना नहीं जाना चाहिए. असल चीज़ क्या है, करो, लिखो, पढ़ो और लिखो, इवैल्यूएशन कराओ, बस. Education is a matter of life and death for Pakistan and for other nations. If nations, अच्छा ये जो है ना स्वीपिंग स्टेटमेंट्स अच्छी चीज़ नहीं होती. बड़े बड़े लोग हैं, पढ़ है, वो जिंदा है, कोई मरे नहीं है, कोई एजुकेशन जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि तो इसमें थोड़ा सा जो है ना वो हेजिंग करे. हेजिंग, अब्दुल गफार, HEDGING. हेजिंग का मतलब है कि थोड़ा सा उसको पोलाइट करे, डिप्लोमेटिक करे. Education is considered to be a matter of life and death.
एजुकेशन इज सो सीरियस इज लाइक इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। थोड़ा सा इसमें क्या कहते हैं उसको, पैडिंग करें, पैडिंग। इफ नेशंस नॉट फॉलो, इफ नेशंस डू नॉट फॉलो, डू नॉट, अभी हमने टेंस पढ़ा, डू नॉट, नॉट फॉलो कोई टेंस नहीं है, बाकी ठीक है। रहमानुल्लाह खान, ऑफ कोर्स क्लासरूम डिसाइड जो, ठीक है। ये मैं चीखता इसलिए तो आपको सुने, आप उसको सुने आराम से, आप नहीं सुनते। तो क्लासरूम सिंगुलर है तो डिसाइड्स, प्लूरल है क्लासरूम्स है तो डिसाइड, और क्लासरूम एक लफ्ज है, दो लफ्ज नहीं है। ऑफ कोर्स जो है ये दो लफ्ज है, अलग-अलग है। स्टूडेंट्स आर गाइडेड, ये पैसिव वॉइस है, गाइडेड, एंड टीच इन अ प्रॉपर वे टू मेक क्रिटिकल थिंकर्स, नॉट जस्ट क्लेमिंग द ओल्ड स्टडी स्टफ। ठीक है, बाकी सही है। नेशंस आर मेड इन क्लासरूम्स, क्लासरूम इज अ प्लेस फ्रॉम विच वी कैन, वी मत करो ना, मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, क्या करूं मैं तुम्हारे साथ? अभी मैंने आपको कहा कि प्रोनाउन मत यूज करो। किस तरह आप लोग समझेंगे? कितना दफा मैं कहूंगा? प्रोनाउन को अवॉइड करें, नो प्रोनाउंस। वी कैन बी टीचर्स की जगह देयर कैन बी टीचर्स, देयर कैन बी टीचर्स। सईद अहमद, education system is almost collapsed in Pakistan. There is no professional teachers and principals. ये कौन सा प्रिंसिपल है? उसूल वाला प्रिंसिपल है या वो पल वाला, PAL, जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है? अब टीचर का प्रिंसिपल के साथ क्या ऐसे ताल्लुक बनता है? अच्छा, दूसरा ये जो टॉपिक है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये जनरल है। पाकिस्तान को आप एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर सकते हो। In every corner at the street, open up private schools and without any strong. In every corner of the street, private schools are opened. Are opened. फिर ठीक होगा, बाकी सही है। Thank you, Delang, for the summary. All the best. Thank you. See you now in Pakistan affairs. Please, ये जो नोट्स मैंने आपको दिए ना इस टॉपिक पे, तो वो जरा पढ़ो, बार बार पढ़ो, फिर उसको सेव टू में लिखो और फिर मुझे टैग करो।